down. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज एक और नया वीडियो लेके आए, एक एक्सेसरी लेके आए हम MT-15 के लिए, फोर्क ऑयल सील कवर। तो वो क्या है, तो आप ये जो फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो, इसमें काफ़ी तौर पे इशू आ जाता है फोर्क ऑयल सील लीकेज का। वो रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर एक कवर आता है, जो अभी तो फ़िलहाल बहुत से बाइक्स पे नहीं लगाया जाता, लेकिन अभी बहुत से लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका फोर्क जो है बाहर के धूल मिट्टी से प्रोटेक्टेड रहता है, फिर उससे लीकेज होने का या फटने का टेंशन नहीं रहता है। तो वो कैसे दिखता है, चलो उसको अनबॉक्स करते हैं। तो दिस इज़ द फोर्क ऑयल सील कवर। ये हमने मंगाया है MotoTrenz से, समथिंग अराउंड 700-800 का आता है। मेरे को जल्दी से डिलीवर हो गया था 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि इसकी डिलीवरी मुंबई से ही होती है, इसलिए मुझे जल्दी मिल गया था। तो हाउ इज़ इट और कैसा परफॉर्म करेगा ये आपको कुछ दिनों में बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल तो अनबॉक्स करके इसे क्विकली बाइक पे लगा दें। चलो, तो कुछ इस तरह दिखता है फोर्क ऑयल सील कवर। ये अभी लगाने के बाद आपको प्रॉपर्ली समझ जाएगा कैसे है। नॉर्मल स्पंज के जैसा है, लेकिन ये अपने ऑयल सील कवर को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंदर क्या क्या दिया है, तो ये था उसके अंदर 2 ऑयल सील कवर्स है, एक स्टिकर दिया गया है और 4 जिप टाई दिए गए उसे टाई करने के लिए। तो उसे कैसे इंस्टॉल करना है चलिए देखते हैं। Afraid won't let you fall, girl. Don't be afraid, won't let you fall, girl. तो आई होप आपको ये छोटा सा अपग्रेड अच्छा लगा हो। ये बिल्कुल कॉस्मेटिक नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ है। मोस्टली अपसाइड डाउन फोर्क जिन बाइक्स में होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो बाइक्स के ऑयल सील जल्दी से लीक हो जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद सकते हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है, छोटा सा वीडियो था इस छोटे से अपग्रेड के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।